for the following performance. Now I would like to invite Mr. Ajay Sharma, the founder director of Delhi Literature Festival, to come and give a welcome address and welcome everyone. Ajay Sharma ji, please. Welcome. The rock star of today. Thank you, Parul ji, and good evening to each one of you, especially our dignitaries on the stage. Madam. So, thank you so much, Madam Blossom Kocha, Dr. Blossom Kocha, General Pannu, Mr. Tejendra Luthra Saab. Thank you so much. I know it is a very, I don't know whether you are comfortable with this kind of occasion or not, but I'm sure you will be enjoying the kind of the youthfulness. And Ramaji is, she's ever youthful. And I'm sure you would be enjoying this evening. Ramaji, thank you so much. My sister Bharti Bhargavji, thank you so much. And if I'm correct, sorry, of course, Pavleen is there. Dr. Lakshmi, Dr. Vajpayee, yeah, thank you so much, Dr. Vajpayee. Thank you so much for coming. And of course, our friend and young author who's written a book on Ayodhya, Nina Rai, is here with us. And also we have our other friends. Thank you so much, and all of you here, thank you so much for being part of this inauguration ceremony of the Delhi Literature Festival 2022. Thank you once again, and I just must mention, of course, our dear old friend Nasir is here with us, Nasir Abdullah, and I must tell you, because there's been a mixed feeling. We have also we saw the demise of one of the most popular artists this nation has seen, Shri Babbi Lahiri ji. So we remember him on this occasion, and of course Lataji, who passed away recently. This is in fond memory that we are remembering them all of them on this occasion. And of course, we realize that the last year has been extremely painful. We have lost a lot of near and dear ones. So we remember all of them with a lot of fondness, and they are all part of us, still part of our lives, and I'm sure that they are around us. So thank you so much once again for being here. I must give you some idea about what this literature festival is going to be about this year. As every year, what we do is we organize a literature festival which is between 2 weekends. So it is on between 2 weekends, from Fridays, Saturdays and Sundays, starting from 18th of February and going over to 27th of February. And I'm very pleased to inform you that this year we have some Nobel laureate, Mr. Kailash Satyarthi, who will be doing his book. He wrote a book on COVID last year, which is a bestseller. Recently, we also had a book from the Union Minister, Shri Bhupendra Yadav ji, with economist Ila Patnaik on the rise of the BJP, which has also become a bestseller. So he's also going to be part of this festival this year. Then we're also expecting the Culture Honorable Union Culture Minister, Shri Kishan Reddy ji, who will be speaking with us on the 19th Saturday for the inaugural session, which is going to be virtual, because this year we're going to go virtual. And my request to all, especially the young ones, is that please continue to wear your mask and keep the COVID protocol. We also have some of these bestsellers from the Bollywood. We have Neena Gupta ji, who's written a book last year. Then we have a book from Divya Datta. Then we have many other interesting books lined up this year. Manish Tiwari's book is there, of course, and Dr. Shaji Tharoor, who is also very sensitive about a lot of things. So, we are indeed grateful to some of these big authors, big journalists who have written books, and who have agreed to be a part of this year's festival. We would also like to thank our partners, especially NewsX, which is doing a live streaming of our show. Then we also have DLF, which is the venue partner. Then we have Who, which is a homegrown social media app, which is live streaming this entire show, the entire festival, to almost 20 million viewers across the country. And of course, we have Dr. Blossom Kocha, who has been very kind enough to be present here and also support the festival. Thank you so much, Dr. Kocha. Moving forward, I'll once again thank each one of you. Stay safe, stay home. Over to you, Parulji. Thank you so much. So now I would like to invite Mr. Tejendra Luthra to say just a few words of encouragement for the festival. Thank you so much. I'm really sorry, I was not prepared for this kind of impromptu speech. So please forgive me for this. However, I would like to say something for the literature, because I'm a poet, so I am deeply involved with literature.
I see this step of Delhi Literature Festival as a positive step to promote literature, especially among the young people. I'm very happy to see the young crowd here because young generation, if they support the literature, then our literature can survive and thrive. If young generation is not interested in the literature, then I don't see any future for the literature. So my congratulations to the young crowd here, and my advice to the young crowd also, that you must depend on literature, you must get engaged with the literature for the simple reason. I am with the literature only for one reason, because literature gives me a lens to see myself, to meet myself. And the biggest journey of any human being in this life is not to go outward, but to meet himself or herself. And literature is the best medium, is the best lens which allows us to see ourselves, who we are, why we are here, and where we have to go in life. Thank you very much. Thank you. Right. यार ऑडियो Okay. मैं इसके लिए भी तैयार नहीं था कि मुझे यहाँ एक कविता भी सुनानी पड़ेगी, बट रमा जी और भारती जी 2008 में जब मुंबई में जो हमला हुआ, उसके बाद एक नागरिक के रूप में, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। और उसके बाद मैं हिंदी में लिखता हूँ, उसके बाद मैंने एक कविता लिखी, वो कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इस कविता का जो शीर्षक है वो है मैं आभारी हूँ आपका। एक शहीद कह रहा है, मैं आभारी हूँ आपका। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया। पर मुझे सैल्यूट कर नम आँखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर, पर मुझे सैल्यूट कर नम आँखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी, और उनके जवाबों में पसीना, हचकचाहट, लरसती जबान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा भारी धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी, और उनके जवाबों में पसीना, हचकचाहट, लरसती ज़बान और झांकती पगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो, आप नाहक परेशान ना हो। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था, पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। मेरे पास कुछ और सवाल है, मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज़्यादा मासूम है, जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज़्यादा मासूम है। कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन, कि जैसे कौन तय करता है
कि मरेगा कौन और किस कीमत पर, और किस कीमत पर। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है। किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए। किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। किसने दिया उसे ये किरदार, किसने दिया उसे ये किरदार, और देकर चुप क्यों, और देकर चुप क्यों है। जीते जी मैं इनको भाता क्यों नहीं, जीते जी मैं इनको भाता क्यों नहीं, मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों नहीं। जीते जी मैं इनको भाता क्यों नहीं, मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों नहीं। आपकी मोमबत्ती आपके उबाल, आपकी मोमबत्ती आपके उबाल, और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। आपकी मोमबत्ती और आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। मैं शत शत आभारी हूँ आपका, मैं शत शत आभारी हूँ आपका, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब। सवाल और भी है लेकिन, सवाल और भी है लेकिन, मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। सवाल और भी है लेकिन, मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। धन्यवाद। थैंक यू। It's really beautiful. Thank you so much. Today we saw the humanitarian face of the police officer, who can write good poetry as well. So now we have Mr. Mukesh Suryan, the Mayor of South Delhi Municipal Corporation with us. I would request Mr. Ajay Sharma to formally welcome him. Now I would like to request actress Pavleen Gujral to just say a few words for us. Hello everybody. I feel like there's such stalwarts here. I should be the last person getting the mic, but thank you so much for this honor. And a literature festival is always very important, especially for today's youth who have forgotten how to read. So being a mother myself, I feel like we need such kind of festivals so that बच्चे पढ़ना सीखें. Not just school books, but apart from that, things they like to read. Because what you gather from words, you can't gather from visuals. Visuals आपको already आपकी restrictive imagination दे देते हैं, but books में it's unrestricted imagination. It's your own interpretation and nobody can change that, nobody can touch it. So it's such a beautiful, beautiful feeling. So I think it's a great, great festival, and I think you should spread the word, let other people know that that this festival is coming on, and which encourages people to read, popularizes the books that are already popular, make it even more popular. And I hope that we get to see this for years to come and it flourishes like anything. Thank you so much. Thank you. Best of luck. And now I would like to request author Nina Rai to say a few words. Namaste everybody, my name is Nina Rai and I'm very pleased to be invited to this festival. I'm very pleased to be sitting amongst all the stalwarts here, thank you. And thank you Sharma ji for organizing this. As everybody has already said, literature is a very important part of society. Literature is a very important part of our being, to be honest. And the literature that we discuss on stages, in our bedrooms, in our drawing rooms, it to a large extent determines who we are as a culture.
And every time we come to a literature festival, that the books that come here, they also determine our culture. And I highly recommend everybody to start reading about, especially the young children, and it's been repeated by a lot of people, to start reading and to have more interest in our books and to promote the books. I personally have written a book on Ayodhya. It is called Amazing Ayodhya. And the reason I wrote this book was because every time that I would hear of Ayodhya, I would only hear of conflict. There was no reason, there was no information, there was nothing that anybody could give me about Ayodhya. Nobody could tell me the historical details of Ayodhya. My father was a diplomat and my father was a diplomat and I myself lived abroad for many, many years. I lived in the Middle East, and while I was in the Middle East, I had the opportunity to go to various holy places of Christians, of Muslims, and others. And I realized that every time I went there, I would find books, various books on Bethlehem, the birthplace of Christ. I would find various books on the history of the Mecca, Medina. I myself lived in the Middle East for 10 years. But when it came to Ayodhya, nobody could give me the historical information of Ayodhya. Nobody could explain to me what was so significant about that city that Hindus kept fighting for their rights to get the temple back. Nobody could give me that information, so I took it upon me to study Sanskrit, to read the Ramayana, to research, and after 5 years of research and studying Sanskrit, I put the whole document together and got this book out so that nobody else like me was lost, so that the next generation of our country knows the importance of Ayodhya, and for that matter the whole world knows why it is important. And for those of you who don't know, I'd like to tell you, according to the scriptures, Ayodhya is the birthplace of human civilization of this Manvantar. So that's it, and the rest of the details you'll find in the book. Thank you. Now I'd like to request hello. सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा शर्मा जी को इस दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। हिंदुस्तान भर के बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स मैंने पार्टिसिपेट किया है और मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि इसने अपनी एक अलग पहचान बना ली है पूरे हिंदुस्तान में। और ये भी कि एक उदाहरण देना चाहूँगा, चूँकि आज जो सेशन होना है उससे भी कनेक्ट होगा। लिटरेचर की ज़रूरत क्यों है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज पता नहीं आप में से कितनों को पता है, हिंदुस्तान भर के जितने जेल हैं उनमें थर्ड जेंडर के लिए अलग से रजिस्टर बनाने को, अलग से सेल बनाने को, अलग से वॉशरूम बनाने वगैरह वगैरह, और उनके वो सारा ये आदेश हो गए हैं। सारे फॉर्म्स में अब थर्ड जेंडर का एक कॉलम अलग से होता है। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ जब हमारे हिंदी हो या दूसरी भाषाएं हो, उन्होंने थर्ड जेंडर पे नॉवेल लिखे और वो सेंसिटाइजेशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक का उस पर ध्यान गया। और वो जो लिटरेचर ने जो कुछ किया, उसमें एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ बैठी हैं रमा पांडे, जिनका लल्लन मिस करके एक नाटक आया है। तो ये लिटरेचर की ताकत है। दुनिया भर के मुल्कों में बहुत सारे कानून बदले गए हैं, बहुत सारे सिस्टम बदले गए हैं। आखिरी बात ये कहूँगा कि अपराध, क्राइम हर जमाने में होते आए हैं। हम देखते ही आ रहे हैं द्रौपदी से लेके और उस जमाने में रावण ने सीता का हरण किया वगैरह वगैरह। लेकिन इन दिनों जो अपराध इधर हम जो देख रहे हैं वो इतने, उसमें क्रूरता, वो की भयानकता जो है वो कहीं ना कहीं हमें डराती है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, ये कैसा समाज बना रहे हैं। 5 मिनट के लिए आप टेलीविजन के सामने बैठ जाइए, अखबार देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो एक संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, मानवीयता बढ़ती जा रही है। मैं तो चंबल में मेरी पोस्टिंग रही है, डाकुओं के भी कुछ उसूल होते थे और उनको लोग बाकायदा इज्जत करते थे, वहाँ के लोग वो बागी कहलाते थे, तो कहीं ना उनके भी कोई उसूल होते थे। लेकिन इधर जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा खतरनाक है, इसलिए बहुत ज़रूरत है इस तरह की लिटरेचर की भी
और लिटरेरी फेस्टिवल्स की भी खुदा का शुक्र है या कुदरत का चक्र है, जो भी है, पूरे हिंदुस्तान में आज लिटरेरी फेस्टिवल्स हो रहे हैं और ये बढ़ते बढ़ते कस्बों तक जा चुके हैं। तो ये बहुत सुखद हमारे लिए। मैं इस फेस्टिवल की कामयाबी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। Now I would like to request Lieutenant General Arun to kindly say a few words. Thank you very much for inviting me over here. And I'm very happy sitting among people who have actually, some of them I have met and some of them I haven't met, but I'm very intrigued to see how colorful the evening is, that there is entertainment going on, and we are talking about literature. In this era where either we are shutting down everything and everybody sits at home hoping one day we will all sit together like this. And it's a very special occasion that we are all coming together on an occasion where we're calling it a festival. Festival really is a celebration, and I saw these colors and very, very intrigued about it. I must compliment Mr. Ajay Sharma. Dr. Amna has invited me here. Thank you very much. We are associated with the Lit Fest, which is Valley of Words, and we've done a couple of events together in Dehradun as well as in Delhi. And I find that those people who write books have something very special in them. What is their motivation to research a subject? What is the motivation that they take upon a subject which people, how do they know what people want to research, what people want to know? I think there is a large understanding that they have about their own society and what people should know. And I think also this subject per se, if they are talking about a person or an event, there must be something very deep in them that they are wanting to write about a particular event or history. What is important here, as I understand, is that we all are very curious about the past. And many years down the line, there will be many people who will be very curious about what our present is, because this is also going to become past very soon. Are we preserving our history? Are we writing enough? Are we making sure that our generations in the future will be able to discover what we are and what kind of people we are? What are they going to feel about us? Are they going to have respect for us? Are they going to blame us for something that we could have done for them and we haven't? Or are we leaving something for them that they can really benefit from, and they can use this foundation which is strong, which is purposeful, which is meaningful? And I think each one of us come with that responsibility, and I think those who write about it, I think leave a great foundation for the others to build. Today is the information age. In the information age, everybody has a smartphone. You can type a few letters and you can research on anything. But I think when people and authors write books and poetry, I think there is very deep-seated motivation in them, and how they are moved to talk. And I just heard beautiful poetry by Luthra. He was literally moved, and he moved everybody else. When authors are moved themselves, they have the ability to move everybody else. And all of us coming together, I think, have a common motivation. And I'm extremely thankful to the organizers of Delhi Lit Fest that here we sit together in this era of COVID, where human behavior has undergone a huge amount of change. We want to meet, yet we can't. We are sitting at homes, but we don't know whether we are happy or unhappy, because many times sitting at home gives you comfort because say, I want to go and relax at home. But I think today there is more relaxation in coming together, and meeting of minds is extremely important for good synergy, and I'm getting that synergy here, which I suppose is what Delhi Lit Fest gets to all of us. Thank you very much, and I wish you all the best. I would like to request Dr. Blossom Kojan, who has been associated with us, I think, for years and years since we began. So thank you once again for joining us here, and a few words from your side. Thank
you. I really would like to congratulate, of course, Ajay Sharma and all the organizers for bringing this Lit Fest back again. Like she said, I've been associated, of course, for a long time, and a lot with my books and things. And normally, what I normally write about, of course, is my subject, which is aromatherapy and beauty. But I watched my daughter, who's the younger one, the young generation, and I found that the youngsters are really doing very well, and they do a lot of research. Like, she has done so much of research and so much, and she's written. It's taken her a long time, and what I found in our family, and I'm sure it's a lot of families, that literature is something that can never go out, honestly. It never goes out. Whatever happens, but literature is always there. Even in COVID time, literature was the one that really got a lot of us through. And it's so good that we have these Lit Fest back again. And like General Pannu was saying, that it's so wonderful to see everybody there, and so colorful and nice. And of course, Mr. Luthra's poetry, which was so wonderful, and the book that is coming out about Ayodhya, it's really very, very good. And like you were saying, General Pannu was saying, it's going to leave this thing for generations. I got into books because in writing books for one reason, and I think my daughter also, it's the best way to express ourselves. It's a wonderful way to express, and whatever you say, literature lives on, and it goes on living on, and we do need occasions like this to, publicize, get it going, and so that we really don't ever forget it. I don't think we'll ever forget it, but for those who feel they may go astray, I think this will bring us back again. Thank you, and thank you for organizing. Thank you so much. And now I would like Ramaji to say a few words. So Ramaji has been the senior most advisor with the Delhi Literature Festival. So when I joined as the advisor of the Delhi Literature Festival, literally I used to look up to her for advice and guidance, and she was kind enough to, nurture me into what I am today. So over to you. बहुत बहुत धन्यवाद। लौटते हैं अपनी जुबान हिंदी में, और अब बात होगी दिलों की। पहले जोरदार तालियां कि हम सब मिलकर बैठे हैं कितने दिनों बाद बसंत के मौसम में साहित्य को सलाम बजाने और करने नमस्कार तमाम शब्दों को जो लिखनियों से लिखे हैं और जो आपके दिलों में उतरने जा रहे हैं। हमारे इस तमाम उत्सव की मैं तो खड़े होकर बात करूंगी ताकि तुम लोगों की आंखों में झांक सकूं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हमारा साहित्य स्टोर है जिसमें तुम सीढ़ियों पर बैठे हो, यहाँ बड़े बड़े जो राइटर्स बैठे हैं वो आश्चर्य करते हैं कि दिल्ली साहित्य वालों को ये मदारी की तरह आप लोगों को किसी भी हाट में इकट्ठा करने का या सीढ़ी पे इकट्ठा करने का कहाँ से जोश, कहाँ से प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, हमें प्रेरणा देते हैं आप, आपकी आंखें और आपका हमसे प्यार। इससे पहले हम दिल्ली हाट में फिजिकल करते थे, और इस साहित्य का मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम आम फैम आदमी को मेले में बिठाकर अपनी कविता तेजेंद्र लूथरा जी की तरह सुना सकते हैं, प्रॉफेसर कोचर की बात सुन सकते हैं, बल्लू साहब की बात सुन सकते हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की बात सुन सकते हैं, तो हम हिंदुस्तान का साहित्य जिंदा रख रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो तमाम और साहित्यकार किताबें नहीं कर पाते, हम लोगों के दिलों में उतर रहे हैं आमने सामने। दुआ कीजिए कि अगली बार ये वर्चुअल ना होकर बाकायदा फिजिकल हो जाए और हम ऐसे आपसे बात करें। अभी एक बात इन्होंने कही, इस साल कोविड में आप ये जानना चाहेंगे कि मैं कौन, सीनियर एडवाइजर के अलावा भी मैं आपकी वही रवा पाले हूँ टेलीविजन से, फिल्म से, और मेरी तमाम 7 किताबें आई हैं और अच्छे अच्छे प्रकाशकों क्या वहाँ से आई हैं, क्या फिर से हमारी प्रकाशित है। कोविड में मेरी 2 किताबें हैं। एक किताब जिस पर हम एक सेशन करना चाहते हैं जब ये टाइम निकालेंगे, वो है थर्ड जेंडर हिजड़ों किन्नर के बारे में। इतनी बोल्ड किताब किसी ने नहीं लिखी जो मैंने लिखी। मैंने अपनी जिंदगी
बराबर एक किन्नर के साथ खड़े होकर के अपनी जिंदगी का दस्तावेज लिखा है और उसमें अपना एक्सपीरियंस बताया। आप सबसे सवाल पे सवाल किए कि समाज जवाब दे कि इन किन्नरों की यह हालत क्यों है, हम कौन होते हैं हमको समाज से बाहर निकालने वाले, हमारी हैसियत क्या है। हम गूंगे को रख सकते हैं, अंधे को रख सकते हैं, पागल को रख सकते हैं, समलैंगिक को रख सकते हैं। किन्नर समलैंगिक नहीं है, किन्नर वो है जिन्हें ईश्वर ने एक लिंग नहीं दिया, लेकिन उनको दर्जा क्या था शास्त्र में किन्नर का, वो 1000 लोगों से ज्यादा ऊंचा माना जाता था। महादेव के हर नृत्य में थे उन किन्नरों को आप भीख मांगते अब चौराहों पर देखते हैं। इस तमाम कहानी को अगर आपको जानना है, मैं अजय से फिर कहूंगी, पाटिल से कहूंगी कि एक सेशन इस किताब पर जरूर होना चाहिए। और उस किताब का नाम है लल्लन मिस कहानी है उस किन्नर की जो अनाथ लोगों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती थी और उसका स्कूल पटना में पहले राजनेताओं ने तोड़ा और दोबारा माफिया ने तोड़ा, क्योंकि वो जमीन जो उसके पास थी वो पुल के नीचे थी और वो मारी गई। एक ऐसी भी कहानी देखी, एक वो भी कहानी देखी जो मेरे साथ 16 जिंदा है जो किन्नर थी। तो साहित्य आपको क्या करता है, साहित्य आपको समाज के पास ले जाता है। और क्या कहता है, आपने लिखी 4 लाइनें आपको देती हूँ कि सूर्यमुखी सपना टूटा किंतु अंधेरे को दी आंखें, सूर्यमुखी सपना टूटा है किंतु अंधेरे को दी आंखें, ताकि हजारों सूर्य अजन में इसी कोहरे में से जाके, और वो हजारों सूर्य तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो, और तुमको साहित्य में चमकना है। कीप राइटिंग कीप रीडिंग। ये जो आप देखते हो टेक्निकल तमाम जाएगा, ये पढ़ते हो मोबाइल में, उसको पढ़ना छोड़ के किताब को रात को लेके बैठो, किताब तुम्हारी दोस्त बनेगी, उसमें से खुशबू आती है, उसको छू के देखो, उसका स्पर्श किसी महबूब करता है। किसी किताब को छाती पे रख के देखो, माँ की तरह आपको सुला देती है, तकिए पे रख के देखो, महबूब की तरह सुला देती है। किताबों से प्यार करो दोस्तों, आप किताब से प्यार करोगे, लिखना सीख जाओगे। हर एक में एक लेखक छिपा है। कल हमने यहाँ प्रतियोगिता भी की है, इंस्टा प्रतियोगिता, जिसमें तमाम नौजवानों ने लिखा है। हर नौजवान से मैं कहती हूँ, उठा कलम चला कलम, लिख कुछ तेरे दिल की बात। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अगले हर वर्ष का जरूर बहुत प्यार। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुकेश सूर्यान जी से कि आप भी कुछ शब्द बोलें और हमें एनकरेज करें। थैंक यू एवरीवन। लोत्रा साहब, वाजपेयी साहब, हमारे रमा पांडे जी, और एक बार आप जोरदार अयोध्या के लिए ताली बजा दीजिए। मेरा तो आना ही सफल हो गया यहाँ पे जब मैंने इनके मुँह से सुना कि उन्होंने अयोध्या पे किताब लिखी है। और आजकल एक नया गाना भी आपने सुना होगा, काशी अब सजने लगा, अयोध्या अब सजने लगा, सुना है ना सबने? तो उसको एक बार यूट्यूब पे स्क्रॉल करके जरूर सुनिए। मैं शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि बुलाने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए कि 4-5 रिमाइंडर डाल दो, 10-12 कॉल कर दीजिए। मैं पंजाब से आया, मैं पंजाब में कैंपस में था, सुबह 5 बजे पहुँचा, सुबह से लगातार दौड़ रहा हूँ, लेकिन शर्मा जी के लगातार रिमाइंडर। और मैं हैप्पी टू सी है कि मैं पहले तो ये सोच के आया था कि आऊँगा, स्टेप इन करूँगा, स्टेप आउट करके चला जाऊँगा, और जब देखा सभी लोग बैठे हैं और इतने अच्छे बातें यहाँ पे हो रही हैं और लिटरेचर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी है। लिटरेचर टू लिटरेसी, लिटरेचर टू लिटरेसी, लिटरेट कर जो लिखने वाले लोग हैं उनको तो मैं सलाम करता ही हूँ। अभी रमा जी ने बताया अपने बारे में, वाजपेयी जी ने बोला, जैसे कोरोना सबने देखा होगा पिछले 2 साल में, मैंने भी देखा है। और कोरोना ने हमें जीवन जीना भी सिखाया है, परिवार क्या है, फैमिली क्या है। लेकिन कब जाने नया कोरोना आ जाए, तो जब समाज में हम बात करते हैं लिखने की और समाज में बात करते हैं कल्याण की, जैसे इन्होंने अयोध्या लिखा है, तो अयोध्या लिखा है। मेरा कहीं लक्ष्य नहीं है कि मैं 50 साल या 100 साल अपना जीवन दूँ। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं समाज में जितने भी दिन रहूं, कोई ऐसा काम करके जाऊं कि मुझे 100 साल तक याद किया जाए। तो इन मीडिया के नाम पे ताली बजाइए, इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अभी हम यहाँ जितने भी मेंबर बैठे हैं,
हम सबको ये प्रण करना है कि समाज के नाम पर चाहे लिखना पड़े हमें, या कुछ समाज कल्याण कराना पड़े, या कोई पौधा लगाना पड़े, या किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना पड़े। मैं अब से पहले एजुकेशन पे काम कर रहा था, और जब पूरा वर्ल्ड वाइड शटडाउन था तब भी हम एजुकेशन में काम कर रहे थे। और दिल्ली के अंदर पहली, मैं दिल्ली नहीं कहूँगा, पहली देश में कहूँगा जो वर्चुअल मेगा पेटीएम की थी वो मैंने लॉन्च की थी। मैं पेशे से IT बैकग्राउंड है मेरा, बट मैं चुनावी कंपनी में था तो मैं कुर्ते पजामे मेरा फॉर्म हो गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं दूसरी बार इसमें यहाँ पे आया हूँ इस सेंटर के अंदर, दोनों बार। कोरोना काल में भी जब सब लोग घरों के अंदर बंद थे, तब भी हम जैसे लोग समाज कल्याण के लिए हर घर को राशन पहुंचाने का काम, हर घर को दवाई देने का काम, आपका जो हमारा जो मेडिकल वेस्ट था उसको कलेक्ट करने का काम, और उससे भी बड़ा इतिहास रचने का हमने काम किया था। गूगल पे डाल लेना मेरे नाम से। कोरोना के अंदर जब सब कुछ बंद था, प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे घर पे बैठे थे, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, जो गरीब परिवारों से थे, जो हमारे पुअर फैमिली से आते थे, 1,27,000 बच्चों को हम स्कूल में दाखिल कराने का हमने काम किया था कोरोना के अंदर। तो देश का भविष्य है। आपका आर्थिक नुकसान हो जाए, आपको फाइनेंशियल डैमेज हो जाए, आपका बिजनेस लॉस हो जाए, हम विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन रुक गई, आपकी लिटरेसी ठप हो गई, तो ये देश कैसे बढ़ेगा? हम कहाँ से लाएंगे नए वाजपेयी जी? हम कहाँ से लाएंगे रमा जी? हम कहाँ से लाएंगे लुथरा जी? पढ़ाई लिखाई, आप इसमें लिटरेचर के अंदर एक और बात डाल लीजिए। आपको कहीं कोई बच्चा सड़क पे अगर मिलता है, या कोई परिवार आपको कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आपने कुछ नहीं करना। आप सब विद्वान लोग हैं, आप सीधे निकल के स्कूल में ले आइए। आपने सिर्फ उसका नाम बताना और आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। बुक्स हम देते हैं, खाना हम देते हैं, यूनिफॉर्म हम देते हैं, बैग हम देते हैं, एवरीथिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि लिटरेचर लिखने वालों को भी डेवलप करना पड़ेगा, तभी तो हम लिटरेचर लिख पाएंगे, अथवा लिटरेचर लिखने वाले ही खत्म हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपका अभी जो ये काम चल रहा है इसको और आगे बढ़े, इसमें 4 चांद लगे, तो आपने भी ये बीड़ा उठाना है, पकड़ना है इसको। शिक्षा एक ऐसा आपके पास हथियार है। आप इस संसार में, इस देश में, परिवार है हमारा, हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और आजकल देखने में भी आया है, और कोरोना में टेस्ट भी हो गया कि बच्चे माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप परिवार को छोड़ के, लोग एक दूसरे को छोड़ के कैसे भाग लेते हैं। लेकिन ये एजुकेशन ऐसी चीज़ है आपके साथ में जो कभी आपको छोड़ के नहीं भागेगी। कभी आपको समाज में बीच में जब खड़ा होना पड़ेगा तो कभी आपको गर्दन झुकानी पड़ेगी कि मैं पढ़ा लिखा रही हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँ। तो शिक्षा का अभाव, एजुकेशन का अभाव किसी भी बच्चे के समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं इतनी आपको बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि समाज में अगर लिटरेचर को बढ़ाना है, इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो हमारी जो लिटरेसी, हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारे जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं किसी सब्जी की दुकान पे या किसी किराने की दुकान पे किसी छोटे बच्चों को काम करते हुए देखता हूँ, तो मैं फट से पढ़ लेता हूँ उसकी, भैया स्कूल नहीं गए? बोले स्कूल गया था, आज ये हो गया, मम्मी जाने नहीं देती, पापा कहते दुकान पे काम करो। तो हम उसको भी समझाते कि आपको इसके स्कूल जाने से आपका फ्यूचर कैसे बदलने वाला है। घर में एक बन जाएगा, कोई IAS IPS निकल जाए तो पूरा परिवार 3 पीढ़ी सवर जाती है, और जो आने वाली जनरेशन में वो भी डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा हमेशा कि एक डॉक्टर होता है जो 40 साल पढ़ाई करता है, वो जेल में 10 साल नौकरी करता है, 10 साल अपनी प्रैक्टिस करता है, वो पूरा जीवन अपना एंजॉय जीता है। लेकिन एक मजदूर वो बचपन से ही 7, 8, 10 साल से कमाना शुरू करता है, उसकी जवानी, बुढ़ापा सब कमाते कमाते निकल जाता है, लेकिन उसके शरीर पर कभी भी अच्छे कपड़े नहीं होते। हमें इस नए भारत को डेवलप करना है, हमें इस नए भारत का निर्माण करना है। हर प्रत्येक व्यक्ति को घर से निकाल करके उसको एजुकेट करना, उसको एजुकेशन दिलानी है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी अजय शर्मा जी को कि जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको सम्मानित करें और उनका वेलकम करें। डॉक्टर नासिर जवाद जरा स्टेज पे आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीना राय जी से कि अपनी किताब अयोध्या जो अपने मुख्य अतिथि हैं श्री मुकेश सुजान जी को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट राकेश जी, मुकेश जी,
Mukesh ji, 1 second. I'll request Dr. Blossom Kocher to present a small memento from Blossom Kocher to our chief guest, Shri Mukesh Suryan ji. Dr. Blossom Kocher, thank you so much. May I request Madam Samantha Kocher ji to please present a memento to Tejinder Luthra ji, Senior IPS Officer, Special Commissioner, Delhi Police. Luthra sahab, thank you so much for joining today at the inauguration ceremony. Midro ji, jordar taaliyan ho jaye. Thank you so much. May I request Dr. Amna Mirza to please come on the stage and present a memento and a token of gratitude to General Panu Sahab for being with us today. Thank you so much. I request Ms. Meenu Agarwal to present a memento and token to Rama Pandey ji. May I request Madam Gayatri Sharma ji, Bharatnatyam artist from Kalakriti Arts and Head of Communications, Rolls-Royce India and South Asia, to please come on the stage. Thank you so much. I request Madam to please present a token of gratitude to Vajpayee Sahab. Thank you so much. I'll request Parul to present a token of gratitude to Namami ji. She's been there with us whole day. I'll request Mr. Nasir Abdullah, our brother, please come all the way. So we have Pavleen. Pavleen was also seen in the latest, what do you call it, blockbuster? I don't know. Gairaiya, she was in Gairaiya, she was part of Gairaiya. Can I request Nasir bhai to please present a token of gratitude to Pavleen Gujral ji. Kunal, can I request Mr. Kunal Gupta to present a token of gratitude to the author of Ayodhya, Madam Neena Rai. Thank you so much. I request Dr. Nasir Jamal to present a token of gratitude to I request Mr. Anup Sharma ji to please present a token of gratitude to our darling and the youngest participant at the Delhi Literature Festival, Shri Rama Pandey ji. Thank you so much. If I'm not missing one, over to you. Thank you everybody, and I would now like to invite Mr. Nasir Jamal, the director of the Delhi Literature Festival, to come and give the vote of thanks. Thank you, Parul-ji. Parul-ji has been with us consistently for the last 10 years. Thank you once again to all of us, all of you present here, and dignitaries on the dais, General Panu Sahab, Dr. Blossom Kocher, Shri Tejinder Luthra ji, Rama Pandey ji, Ms. Bharti Bhargava, Lakshmi Shankar Vajpayee ji, and then Pavleen Gujral, Neena Rai ji, and other dignitaries on the dais. This is a wonderful journey for the last 10 years. This is almost a decade now we have covered this journey where we have gathered a lot of people and we have invited a number of dignitaries and authors, opinion leaders across different platforms, and we have conducted the different sessions, editions at different places in the city. Not only at one place, at Delhi Heart, we have done it at IGLCA and other places as well. Actually, this is a city's inherent festival. So we wanted to make it so inherent that it has to cover every place and every folk also.
Now, every year we invite and give chance to the emerging authors also, young dynamic authors, opinion leaders. And this year also we have lined up a number of good authors, which you can see if you visit the website www.delhiliteraturefestival.org. And we would also like to invite all the people to see the live streaming of Delhi Literature Festival on Facebook. We are also there on Group. We also thank all the partners which have actually they have contributed a lot for the success of the festival, like the DLF Mosque is actually given us a venue, and this venue has been last year also. We had a very successful show last year. We also thank our other partners, Vodafone, Idea. We thank Dr. Blossom Kocher for supporting us as always, and also the media partners for this festival. And we look forward to invite and to have all of you there to participate in the digital edition of this festival. And moreover, I think next year we'll be going more physical than virtual, but this virtual has to remain. So we'll be in hybrid mode from next year, and we look forward to see you all again next year. Thank you so much. Thank you.